Did you see something? Somebody used my board and drew some pictures on it. Do you know who did it? Well, speak slow, because now I'm going to look at them that what are they doing now? So come with me. What is this? I don't know who drew these pictures. क्या आपको मालूम है कि ये pictures किसने draw की? Because I just wrote present continuous and just I went out. Somebody came and drew these pictures. Let's see. Let's take the first picture. What is he doing? ये क्या कर रहा है? He's smiling? What is he doing? He's crying. Maybe he's sad, that's why he's crying. What is this doing? He is laughing. What is he doing? Well, he is singing a song, also he is dancing. What is this person doing? This is a flower, he's a boy. I think he is looking at the flower. Oh my God, what is he doing? He is winking. What is he doing? It's dangerous. He's getting angry. Maybe on his result or something like that. Well, ये pictures तो हमारे टॉपिक से रिलेट कर रही हैं. I don't know who drew these pictures. Well, let's see. Just give me a few seconds. I'm coming back and I will let you know what is present continuous. अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि what is present continuous tense. Present continuous tense क्या होता है और इसके sentences कैसे बनते हैं. Remember few seconds ago I shared with you some pictures. मैंने आपके साथ कुछ pictures share की थी जो कि कुछ movements कर रही थी. Someone was dancing, someone was crying, someone was laughing, someone was winking, someone was getting angry. Oh, I shared a lot of pictures with you. Let's come here. Subject plus SMR plus verb first form ing. That means कि आप यहाँ पर fourth form of verb इस्तेमाल करेंगे. Like playing, reading, writing, speaking, listening, catching, discussing, and there are many other sentences or verbs you can use here. अच्छा, what is present continuous? ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि present continuous tense हम क्यों और कब इस्तेमाल करेंगे. An action is going on at the time of speaking. जब कोई काम चल रहा हो या जारी हो at the time of speaking, जब हम उसकी बात कर रहे हों तो उस वक्त वो काम चल रहा हो तो that is called present continuous. Second, temporary situations. वो काम जो कि temporary situations हो या कुछ लम्हे के लिए हो तो उस लम्हे के बारे में भी आप present continuous tense से ही sentences बनाएंगे. For instance, वो रो रहा है. Look, he's crying. वो हंस रहा है या वो मुस्कुरा रहा है. He's smiling. वो हंस रहा है. He is laughing. वो गाना गा रहा है. He is singing a song. वो डांस कर रहा है. He is dancing. So viewers, you have seen कि हम इस स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए बहुत सारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस बना सकते हैं. You can write more examples in the comment box by using this structure. I'm giving you some ideas. What are you doing now? अभी आप क्या कर रहे हैं? You're watching my video. What is your brother doing? आपका भाई क्या कर रहा है? You can write it in the comment box. Like he's singing a song. He is watching TV. He is discussing with his friends about the birthday party. तो आप इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके डिफरेंट कंटिन्यूस या कंटिन्यू एक्शंस के बारे में सेंटेंसेस बना सकते हैं. आई होप दिस लेक्चर इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस. एंड यस, आई ड्रू द पिक्चर्स बाय माई सेल्फ. वो पिक्चर्स मैंने ही ड्रॉ की थी ताकि आप प्रेजेंट कंटिन्यूस को समझ सकें थ्रू पिक्चर्स. बिकॉज इन दीज पिक्चर्स यू कैन सी सम एक्शंस आर गोइंग ऑन. और यहाँ पर क्या है? एन एक्शन इज़ गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. तो यहाँ पर भी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एक्शंस चल रहे हैं. इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड यस, सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.